ISRO का प्रोग्राम होता है एक स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, you can look that up. And then there are these Olympiads, international Olympiad in astronomy and astrophysics. Definitely you can participate in those as well if your mathematics and physics is good enough. You have to learn basic physics, electrodynamics, classical physics, then advanced classical physics, then quantum mechanics, all these things, special relativity. You have to learn these theories, these models in physics, right? Carl Sagan is obviously one of them, and one of my personal favorite, जिसमें physics, mathematics सबका बहुत मीठा सा रसमलाई है, मैं नहीं दिखाऊंगा, is Roger Penrose's book called Road to Reality. I absolutely love that book. अगर आप हाई स्कूल में हैं एंड यू रियली लाइक एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, बट आपको पता नहीं चल रहा है कि किसके साथ मैं डिस्कस करूं, क्या प्रॉपर्ली पढूं, कोई रोड मैप नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है मेरे पास, वेल in this video we will sort that out for you once and for all. जब मैं हाई स्कूल में था अपने, I saw this book by Carl Sagan, one and only, and this book Pale Blue Dot was an absolute glory for me. मैं आज भी इस बुक को अपने साथ हर वक्त रखता हूँ जब भी मुझे कुछ वापस से इनोवेशन का जो कीड़ा है या इंस्पिरेशन चाहिए होता है. I go to him, I read his book, try to see myself in this very small speck of dust suspended in a very large sunbeam, in a very small galaxy, in a very vast universe. So I try to keep this vastness of space within myself so that मैं अपने नेचर को, आसपास के यूनिवर्स को इन्वेस्टिगेट करने के उस कीड़े को जिंदा रख सकूं. So if you are in high school and you really want to study physics, especially astrophysics, astronomy, but तुमको समझ नहीं आ रहा कहाँ पर क्या पढ़ना, you have no guidance and anything, this video will be helping you to do that particular thing. So stick around till the end and we will talk about it in very detail. So सबसे पहली चीज, अगर आपने फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया है and you're very interested in physics, then you know that the world of physics, as interesting, intriguing and absolutely amazing it is, it has to do with math, right? Without mathematics you can't go much farther in physics. So the idea is, अगर आप फिजिक्स में एस्ट्रोफिजिक्स परस्यू करना चाहते हैं लेटर कॉलेज लाइफ में जाकर, then you have to get a good grip of mathematics, right? तो हाई स्कूल में हो, क्लास 10, 11, 12 के स्टूडेंट हो, start learning mathematics, learn algebra, learn calculus, learn differential equations, learn statistics. These are very important tools जिनको आप पूरी लाइफ में, अगर आप फिजिसिस्ट बनते हो, you will be using it. And even if आप फिजिक्स नहीं परस्यू करते हो, you will be using these things anyway if you're going to be in academia or in science anymore. So you should get a good grip of mathematics. It's a skill. After all, skills का आप यूज कर सकते हो. So it's very important. सबसे पहले आप इन चीजों को यूज करो. इन बुक्स को आप जो इन पर्टिकुलर टॉपिक से उनके लिए कौन सी बुक्स रेफर करनी है, ऑल दोज नेम्स हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे सो दैट आपको इजी रहेगा उनके लिंक्स वगैरह पर जाने के लिए, अगर आप खरीदना है तो दैट वुड बी इजी फॉर यू. सो दैट इज वन थिंग कि मैथमेटिक्स से डरना नहीं है. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, राइट? अगर आप थ्योरी परस्यू करते हो, यू विल बी यूजिंग मोर मैथ देन एक्सपेरिमेंटलिस्ट्स, बट एनीवे एक्सपेरिमेंटलिस्ट्स कम मैथ यूज नहीं करते हैं. दे हैव टू हैव अ गुड होल्ड ऑफ मैथमेटिक्स. दे नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो डेटा है वो कैसे मैथमेटिक्स या मेरी जो फिजिकल थ्योरीज है उनके साथ कोरिलेट कर रहा है, कैसे उसके साथ वो बैठ रहा है. द एक्सपेरिमेंटल data, is it fitting my theoretical simulations? That is very important. So mathematics is going to be necessary. It is compulsory अगर आप फिजिक्स में उसको परस्यू करना चाहते हो तो. Then the other thing is कि भाई ठीक है, मैथ्स तो हम कर लेंगे, I'm naturally good at math, but मैं फिजिक्स कैसे पढूं, एस्ट्रोफिजिक्स के में क्या शुरू करूं? So there are two things. दो तरह के लोग होंगे जिनको एस्ट्रोफिजिक्स कोर पढ़नी है, but अभी आप क्योंकि हाई स्कूल में, so you can't do that, so you have to start somewhere. There are a lot of people, like I said, you can start with Carl Sagan's book to get the idea of the jargon used in astrophysics. इसमें बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, but then there are a lot of astronomers, lot of astrophysicists and particle physicists जिनकी astrophysics पर book है. I will mention all of them in the description. So one of them is Brian Greene, the other one is Brian Cox, then there is Michio Kaku, Neil deGrasse Tyson, Carl Sagan is obviously one of them, and one my personal favorite जिसमें physics, mathematics सबका बहुत मीठा सा रसमलाई है, मैं नहीं दिखाऊंगा, is Roger Penrose's book called Road to Reality. I absolutely love that book. So इन सबको आप अगर अच्छे से पढ़ना शुरू करते हो, you go through the chapters, you learn to read the book, learn to get the idea of what they're saying, and then you move to the other book, and then you start reading. क्योंकि you see, learning physics is not going to end by reading a few books. You have to then pursue mathematical theories also. You have to learn basic physics, electrodynamics, classical physics, then advanced classical physics, then quantum mechanics, all these things, special relativity. You have to learn these theories, these models in physics, right? Only then will you be able to learn what you have to do in astrophysics. तो वहां पर जाने के लिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा. So I suggest you start off with these books, क्योंकि आप हाई स्कूल में हो. So you start off with these books and try to get understanding of what astronomy is all about. एस्ट्रोलॉजी नहीं भाई, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है? वो हाथ पढ़ने मत बैठ जाना अपने वाले दोस्तों का. ओके, सो इफ यू आर स्टार्टिंग विद एस्ट्रोनॉमी, आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विद दीज बुक्स, क्योंकि अभी आप मैथमेटिक्स में इतने रिगरस नहीं हो. सो यू स्टार्ट विद दीज बुक्स, एंड द बेस्ट थिंग इज
to accommodate those people जिनको इनमें बहुत interest है. Indian government and even foreign people, foreign organizations, academic people, they have a lot of programs, lot of summer schools, winter schools programs. They have internships जिनको आप कर सकते हो. ISRO का program होता है एक school students के लिए. You can look that up. And then there are these Olympiads, International Olympiad in Astronomy and Astrophysics. Definitely you can participate in those as well if your mathematics and physics is good enough. But if you want to start off, yes, you need to start with the basics. ठीक है. और आपकी सहायता के लिए हम एक WhatsApp community बनाने वाले हैं. In that, all those people जिनको बहुत interest है astrophysics में, astronomy में, you can go into those groups, talk to the people. We will send the materials so that आप वहाँ पर discuss कर सकते हो चीज़ों को, पढ़ सकते हो ज़्यादा चीज़ों को. And we will also have interaction sessions. In fact, ये books जो हम mention कर रहे हैं, some of those books we will be giving away. For that हम Google form बनाएंगे and that is there in the description. You can fill that up, fill your details, and then we will further tell you what to do. So that is pretty much it. Community हम बना देंगे. The rest is your duty to be a part of that community, to be those students who actually enjoy doing physics, who actually enjoy investigating these nuances of nature, right? And with that, this video comes to an end. I hope to see you in those interaction sessions. Bye bye. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना. चुनिए SciAstra और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार. Download the app now.